Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Student, for more informative videos please subscribe my channel. Alright student, आज क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9A का। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर ऑन अ लाइन। पिछले लेक्चर में हमने लाइन के बारे में पढ़ा था कि लाइन की एक डेफिनेट लेंथ नहीं होती। बिकॉज लाइन की डेफिनेट लेंथ नहीं होती, उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्मॉलर या ग्रेटर किया जा सकता है। अगर उसकी लेंथ ही डेफिनेट नहीं है तो उस पे आने वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो भी डेफिनेट नहीं होंगे। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अनलिमिटेड। क्वेश्चन 5 पार्ट 2 इज हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट में से आप कितने लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हो, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इफ़ यू हैव वन पॉइंट you can draw many lines. In simple words, we can say we can draw unlimited line through one point. So the answer of this is also unlimited. Third part is how many lines can be drawn through two given points. Students, if you have 2 points, so how many lines you can draw? Only one line can be drawn to given points. Only one line. Next question is question number 6. Give an example of non-intersecting lines. For this question, student, you have to understand what is intersecting lines. Okay. See, this is the example of this is the example of intersecting lines. अगर lines इस तरह एक दूसरे से match हो रही हो and they have same common points, these are called intersecting lines. If you have line like this, they can't touch each other, they can't intersect each other. So these lines like called non-intersecting lines. So the answer of this question is this is the example of non-intersecting lines. So next question is question number 7. Take 4 points A, B, C and D on a sheet of paper. Join them in pairs. How many line segments do you get if स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि इफ़ यू हैव 4 पॉइंट्स नेम इज़ ए बी एंड सी। अगर आपके पास ए बी सी और डी 4 पॉइंट्स हो तो आपने इनको इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद आपने इस क्वेश्चन में इसका भी आंसर देना है कि जब वो आप इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग इनको ज्वाइन कर रहे हो, सो हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स डू यू गेट, तो आप कितनी लाइन सेगमेंट्स को आप ले सकते हैं इनमें से। Question number 1 is the points are non-collinear. Question number 2 is the points are collinear, and 3 is 3 of them are collinear. For this question you have to understand the concept of collinear and non-collinear points. Here is the definition of collinear points. 3 or more points lying on the same straight lines are known as collinear points. In simple words, अगर आपके पास 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स हों और वो एक लाइन पर लाई कर रहे हों like this, so this is called collinear point. Or if you have the points not lying on same straight lines, known as non-collinear. If you have points like this, they are not same lines because their points are lying on different places. Okay, so this is called non-collinear. Let's start the answer of first part, question number 7. The points are non-collinear. Non-collinear means points एक line पर नहीं होंगे. So let's suppose point A lie here, point B lie here, point C lie here and point D lie here. Points को आपने join करना है. A को B से मैच किया, B को C से, and this is called lines. This is also called line segment because if the point have ending, this is called line segment. देखिए बेटा, यहाँ पर ये A और B ये भी तो पॉइंट हैं, ये भी आपस में मैच हो रहे हैं, और ये C और B ये भी पॉइंट्स हैं तो ये भी आपस में मैच हो रहे हैं. अब आपसे क्वेश्चन में कहा था जब आपने पॉइंट्स को ऐसे ड्रॉ कर लेना है तो आपने ये बताना है कि कितने लाइन सेगमेंट्स ये आपस में बन रही हैं. सो अब हम इसको काउंट करेंगे. A C 1 लाइन, A B 2 लाइन सेगमेंट, B D 3 लाइन सेगमेंट, C D 4 लाइन सेगमेंट, A
matches to D, that is 5 line segment, and C matches to D, that is 6. So how many line segment they can be drawn? 6. Okay. Question number 7 part 2 is the points are collinear. Points are collinear mean एक ही लाइन पर पॉइंट्स को लाया होना चाहिए. सो पॉइंट्स ऐसे होंगे A, B, C एंड D. एक ही लाइन पे ये सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं. सो कितने लाइन सेगमेंट होंगी? 1. Okay, question number 7 third part is 3 of them are collinear. अब आपने पॉइंट्स को ऐसे ड्रॉ करना है कि उनमें से जो 3 पॉइंट्स हैं बस वही कोलिनियर होने चाहिए. 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने का मतलब है कि 3 पॉइंट्स एक लाइन पर लाई करें. सो वी ड्रॉ हेयर लाइन पॉइंट B एंड पॉइंट C. सो जो फोर्थ पॉइंट है वो कहीं और लाई होना चाहिए. तो चलिए लेट्स सपोज हम इसको यहाँ पर लाई कर देते हैं पॉइंट D को. अब इनको मैच करना है और इनसे मिलने वाली लाइन सेगमेंट्स को काउंट करके वो हमारा आंसर होगा. सो एक ये वाली लाइन तो है ही है, ठीक है. इसको हम काउंट करेंगे. आवर फर्स्ट लाइन, लाइन नंबर 1. लाइन नंबर 2 इज पॉइंट A टू पॉइंट D. दिस इज लाइन नंबर 2. दिस इज 1. लाइन नंबर 3 B to D and line segment number 4 C to D. So how many lines? Draw 4. Next question is question number 8. Name the line segment, rays and lines in the figure below. आपके सामने बेटा ये ड्रॉ हुई हुई है फिगर और आपसे कहा हुआ है कि इसमें से अब आपने ये बताना है कि लाइन सेगमेंट कौन सी है, उसका नेम आपने राइट करना है, रेज कौन सी है एंड लाइन कौन सी है. इफ़ यू रिमेंबर प्रीवियस वीडियो में हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि इफ़ लाइन लाइक दिस दे हैव 2 एरोज, this is called line because they have no definite length. They can be extend according to our need. If line look like this, they have 2 points on their ends. This is line segment. And if you have line like this, 1 point and 1 arrow. Arrow can be any direction, on left side, on right side. So this is called ray. सो अब आपने इस डायग्राम में इसको फाइंड आउट करना है. और एक बात आपने याद करनी है कि एरोस को तो प्रोमिनेट किया जाता है बट पॉइंट्स को प्रोमिनेट नहीं किया जाता. सो अगर अभी आप स्टार्ट है, अभी आप सीख रहे हैं, तो आप अपने पॉइंट्स को थोड़ा सा खुद से डार्क कर सकते हैं लाइक दिस. ओके. सो स्टूडेंट, अब आपके सामने ये डायग्राम है. अब ये देखें, इस लाइन में दिस हैव 2 एरोज. 2 एरोज मीन दिस इज लाइन. सो फर्स्ट लाइन नेम इज A and D. AD. इसको डिनोट करेंगे, बताने की भी ज़रूरत नहीं है. जब आप इसके ऊपर यूं करके इसका सिंबल बना देते हैं, ठीक है. दिस इज लाइन एंड दिस लाइन हैव 1 point and 1 arrow. So if you have 1 point and 1 arrow, this is called ray. So D and C, you can also write C and D, no matter. Okay, C and D, and this is called ray. So draw the symbol of the ray on the top. Alright student, this line have 2 points, 1 point this and 1 point this. If you have a line like this, they have 2 point. This is called line segment. So this is line segment. This is called CB. सिंबल जब आप ड्रॉ कर देते तो आपको ये बताना नहीं पड़ता कि ये लाइन सेगमेंट है, ये क्या है, ठीक है. एंड here this line has also 2 points. This is also called line segment AB. Next question is question number 9. What are concurrent lines in the figure? Name the line which are concurrent at number 1 point O and number 2 is point A. So for this question you have to understand what is concurrent line. See, this is the example of concurrent lines. And this is also a definition of concurrent line. If 2 or more lines pass through a point, if 2 or more lines means अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा lines जो है वो एक point में से pass out हो रही हों, they are called concurrent lines. तो इनको concurrent lines कहते हैं.
सो इस क्वेश्चन में अब आपने ये देखना है, सबसे पहले ओ पॉइंट में देखेंगे कि ओ पॉइंट में से कौन कौन सी लाइन जो है वो पास आउट कर रही हैं, ठीक है। दिस इज द पॉइंट ओ, ओके। फर्स्टली लाइन है बी एंड डी, दिस इज पास थ्रू पॉइंट ओ, ओके। सेकेंड लाइन इज ए एंड सी, दिस इज आल्सो pass through point O. Third line is G and H. This point name is G and this point name is H. This is also passed through point O. And this line also fourth. E and F. This line also pass through point O. आपने यहाँ पर उन लाइन को ड्रॉ करना है बेटा जो O के अंदर से पास आउट हो रही हो, ठीक है। सो 1 line, 2 line, 3 line and 4 line. These are passed through point O. So first part has answer firstly DB, because these are lines, so please put the symbol on the top. And other line is AC. Next line is GH. And fourth line is EF. This is the answer of first part. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट ए। अब आपने वो देखना है कि ए पॉइंट में से कौन कौन सी लाइन थ्रू आउट हो रही है। ये है आपका पॉइंट ए। सो ए पॉइंट में से आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो यहाँ से क्रॉस हो रही है, दिस लाइन, एंड दिस इज ए एंड बी। दिस इज आल्सो पास थ्रू फ्रॉम दिस लाइन। दिस इज ए एंड डी, and this line is also passed through from point A. This is A and C. So your answer is AB, AD and AC. Alright, question number 10 is how many points of concurrency do you find in the figure? आपको बेटा इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अब आपने यहाँ पर पॉइंट्स ऑलरेडी ड्रा हुए हैं, लाइंस ऑलरेडी पास आउट हुई हैं। आपने यहाँ पर ये बताना है कि जब लाइन एक दूसरे से पास होती हुई तो पॉइंट्स बना रही हैं तो कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर लाइंस आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस बना रही हैं। 1 पॉइंट, ये आल्सो क्रॉस बन रहा है। 2 पॉइंट, पास आउट करने का मतलब होता है लाइन आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस हो रही है। 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट and 7. These are the points where the lines cross each other, okay? So simple, you can write 7 points. This is your answer. स्टूडेंट, अब आपकी जो 9th ए एक्सरसाइज है ये आपकी कंप्लीट हो चुकी हुई है। इसका कोई भी आपको क्वेश्चन ना समझ आया हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।